everyone, welcome back to my YouTube channel. So recently I posted one story. If you follow me on Instagram, you must have seen it. वो story था you all can ask me anything so that I can make a Q&A video because मुझे बहुत पहले से बनाना था and पहले मैं देखती थी ना यूट्यूबर्स को क्वेश्चंस के आंसर्स देते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बनाऊंगी when I'll start YouTube. So let's get started. तो मैं बता दूँ, there were many questions. मैंने दो स्टोरी लगाया था. एक था तेरे आस्क मी अ क्वेश्चन वाला, और एक था मैंने एनजीएल का एक लिंक दिया था उसके बाद, मतलब उसके बाद उस दिन के बाद, और एक मैंने लिंक दिया था एक एनजीएल का लिंक जिसमें मैनी ऑफ देम हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस, तो मैं वो भी ऐड कर रही हूँ. ऑल्सो देयर वर मैनी नेगेटिव comments or you can say opinion of people, but उन सबको छोड़ते हुए मैंने कुछ अच्छे एंड कुछ क्वेश्चंस पिक किए. ऑब्वियसली आई कैनॉट आंसर एवरी क्वेश्चन, सो या दीज वर द क्वेश्चंस एंड जो एनजीएल में थे, सो आई कैनॉट पिक each and every question and answer them. So the first question is, what advice would you give for the beginners joining to YouTube? So ऐसा तो कुछ, first, be passionate about what you are doing. Second, be consistent. Okay, be regular with your work. Try to make videos, try to post it, and जिससे engagement बढ़ती है. Okay. Third, show your personality. Don't be afraid to show the real you. Okay, and then don't be afraid of negative comments and लोग क्या बोलेंगे वो सब. There are people who really want to do YouTube and everything, but because of the society, कुछ लोग रहते हैं ऐसी सोसाइटी में जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलता है. बट इफ़ यू वांट टू, यू शुड. ओके, और एकदम भी मत डरना. बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, कोई अच्छा बोलेगा. Okay, be positive. That's the only advice I would like to give for now. What's the most embarrassing moment you have faced in your life till now? ये मैं शेयर ना ही करूँ तो अच्छा होगा शायद. Embarrassing, बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो एम्बेरसिंग थे, बट तब मैं हंस के उड़ा देती हूँ वो बात. तो वैसा एकदम ऐसा इतना एम्बेरसिंग मोमेंट तो मेरी लाइफ में आज तक आया नहीं है. बट बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो बहुत एम्बेरसिंग थे, जो बहुत लोगों के सामने हुआ है, एंड मैंने वो हंस के टाल दिया. होम टूर दे दो. आई विल सून ट्राई टू मेक अ होम, बिकॉज बहुत डिमांड में है. तो यस, मैं ज़रूर आई विल ट्राई टू मेक अ होम टूर रियली सून. ओके, द नेक्स्ट इज ऑल्सो वी नीड होम टूर. Soon I'll try to make one, I promise. So moving forward to the next question, your skincare routine please. So पहले I used to use Derma का niacinamide face serum, फिर Dot & Key का moisturizer and sunscreen, Dot & Key का ही sunscreen. And now currently I am using Plum का rice water serum, Dot & Key का niacinamide moisturizer एंड Dot & Key का ही सनस्क्रीन, वाटरमेलन सनस्क्रीन. कुछ नाम तो मेरे को याद नहीं है, बट कुछ रिफ्रेशिंग सनस्क्रीन कुछ वैसा था, तो मैं वही यूज़ करती हूँ. बट मैं रोज़ नहीं लगाती. आई डोंट डू स्किन केयर एवरी डे. अगर मुझे स्कूल जाना होता है तब भी मुश्किल से मैं थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा के जाती हूँ. हाँ, अगर बाहर जाना होता है तो आई डू. तो यहाँ घर पे मैं नहीं करती. चैनल टू क्योर स्टार्ट कोहली, व्हाट मोटिवेटेड यू? सो आई एम ट्रांसलेटिंग दिस. He wrote this in Assamese. So he asked me why did I started my channel and what motivated me. I wanted to do YouTube since class 6 or 7, I guess. Okay, I wanted to do YouTube since then, and now I am in 11 and now I started doing it. I don't know, मुझे बहुत पसंद है. I love the कैमरा के आगे नाचना, गाना, एक्टिंग करना, मुझे सब बहुत पसंद है. ओके, आई जस्ट लव टू, यू नो, क्या वर्ड होता है वो मैं भूल गई, बट स्टिल आई लव
ये सब करना. So yeah, that's why. And motivation तो पहले I was very like demotivated. Why I didn't start back then? Because there were many people who used to just make me feel bad about myself, and that made me like think that I'm not just good enough to be in this platform. So I didn't start it. But now doesn't matter, it doesn't matter that whatever people say, but I just wanted to do it, so I started it. Motivation मेरे खुद से आया. And also I watched Yashashvi Rajput. If you all know her, she's one of my very favorite YouTuber. उसकी वीडियोस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, to be very honest. And yeah, that's the only motivation while starting this. You are so pretty, where do you live though? Okay, I live in Assam, Guwahati. Yeah, that's the only information I can give. And there are many people who knows where I live. So yeah, I am from Assam. I live in Guwahati. And बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि where do I live. So yeah, I live in Assam, Guwahati. Not Guwahati, like Amingao side. Yeah. What is something that not many people know about you? Khasa ko bhi kintu. So he said, what's something that not many people know about you? And I need to reply with honesty. So what's something that many people don't know about me is probably people know everything about me. Like people who are close to me, they know everything about me. Yeah, I have a very extrovert personality. So there is nothing that people don't know. Yeah, if that's something very personal, they might not know. What prevents you from sharing that part of your life? If there is something that people don't know, it must be very personal. That's why I won't be able to share it over here. Do you like making productive vlogs? I am productive, but sometimes. And yeah, if productive vlogs motivates people, so yeah, I do like making it. Okay. Big fan, ma'am. इतने बड़े celebrity बन गए हो, भूल तो नहीं गए हमें? Of course not. Also, I'm not a celebrity. बार बार ये dialogue मार के मुझे please तुम लोग ऐसे शर्मिंदा मत करो. Moving on to the NGL questions I had. Single. How many districts you have visited? I have visited many states and वहाँ के बहुत districts मैंने visit किया है, तो obviously I didn't remember. Worst movie you have ever watched? Evil Dead Rise. Worst movie, वो भी मैंने सिनेमा हॉल में देखा था, घर पे भी नहीं देखा. Worst से भी worst था वो. Evil Dead Rise या कुछ था, तो हाँ Evil Dead Rise ही था शायद. इतना घटिया मूवी था वो. हाउस टूर प्लीज़ माफ़ कर दो बहन भाई, जो भी मेरे को बोल रहा है मैं कर दूँगी, मैं वीडियो डाल दूँगी हाउस टूर का. What are your future plans? So now I am continuing class 11th. After 12 I really want to apply in some universities, and then उसके बाद I am thinking of doing BBA. Okay. फिर देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी. And that's all till now. Your nickname. My nickname. Everyone calls me with different names because I have many nicknames. My cousins call me Zara. My neighbors call me Mansi. And then school mein and officially my name is Afreen. And then some of my cousins call me Lopa. My nana, my mother's dad, okay, he calls me Janmuni. He used to call me Putli because he used to say that I look like a doll. So yeah, I look like a putla. That's why she calls me Putli. Matlab she used to call me. Now she's okay, I don't want to. Your favorite restaurant, your favorite movie, your favorite ice cream flavor. So my favorite restaurant, I have a favorite resort. Okay, that's Greenwood. Yeah, I love that.
I went to that resort for like 1,000 times, but I'm never bored. Okay, I can again go there. मैं अभी भी जा सकती हूँ. I'm never bored. That's like, it feels like my home. Your favorite movie? I'm a big fan of Pakistani dramas right now. Favorite movie? It's Kuch Kuch Hota Hai. Yeah, it's Kuch Kuch Hota Hai and Ramaya Vastavaya. Also Dear Comrade. These 3 movies I can watch like 100 times. I have watched it 100 times. Favorite ice cream flavor? Cheesecake. Cheesecake एक करता है ना आइसक्रीम, शायद क्या फ्लेवर का होता है पता नहीं, बट चीज़ केक है. हाँ, वो चीज़ केक आइसक्रीम है, मुझे वो पता है. नया नया आया है, आई डोंट नो दैट नेम. उस दिन मैंने रिसेंटली खाया है वो. इट्स वेरी यम. कोन है एंड उसके ऊपर एक ओरियो बिस्किट रहता है. ओरियो फ्लेवर ही है बट उसके ऊपर एक बिस्किट रहता है. दैट्स वेरी नाइस. यू शुड ट्राई इट. इट्स वेरी नाइस. डू यू होप टू गेट फेमस इन फ्यूचर? ऑफ कोर्स, येस. You have been to so many places till now. Just wanted to ask you, which one was your favorite? Kashmir. Kashmir is one of the best place I have ever visited till now. Kashmir, yeah. I want to visit that place like multiple times. Also Arunachal. Have you ever met someone famous? Famous in Assamese celebrities, I have met many people who are famous. And also हमारे घर पे एक मूवी का शूट हुआ था, Assamese movie which is also famous, which was of Prastuti Parasar. Assamese people would know her. तो उनका एक मूवी हुआ था, हमारे घर पे शूट हुआ था वो. So yeah, I have met them. And in Bollywood I have met ये जो गाना था ना, आज तू है पानी पानी, उसमें जो एक लड़की जो मेन कैरेक्टर थी ना, उनसे मैं एक बार मिल चुकी हूँ एयरपोर्ट. और अगर किसी से मिली हूँ तो वो मुझे याद नहीं है. If you ever get a chance to read minds or go back in time, which one will you choose? Read minds. And why? Okay, so there are people who would be so nice to me, like, oh, you're so good, you're so pretty, and then पीछे they'll be like, oh, Afrin, she's so mean. Oh, so yeah, I'll choose to read minds. पास में जाके मैं क्या ही करूँगी? तो yeah, I'll choose to read minds, of course. Your favorite YouTuber? Yashashri Rajput and Mostly Sane. Is there anything about yourself that you want to change? Yes. I'm very aggressive. I have a lot of anger issues and also I overthink a lot. So I want to change my anger issues because मैं बहुत जल्दी भड़क जाती हूँ कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया. एंड लाइक जब भी मैं बोलती हूँ ना, आउट ऑफ एंगर जब भी मैं बोलती हूँ तो आई नेवर थिंक बिफोर स्पीकिंग, कुछ भी बोल देती हूँ. एंड आई बाद में जाके आई फील गिल्टी समटाइम्स. इफ़ द पीपल डिजर्व इट आई डोंट फील गिल्टी, बट इफ़ कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा मैं बोल देती हूँ तो या आई फील बैड कि मैंने क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वैसा. तो या आई वॉन्ट टू चेंज इट. मेरे एंगर इश्यूज़ को मैं चेंज करना चाहूँगी. एंड ऑल्सो माई ओवर थिंकिंग. बहुत अगर बात इतनी सी है तो मैं इतना सोच देती हूँ, विच जो प्रॉब्लम है भी नहीं वो मैं खुद क्रिएट कर देती हूँ. तो या, डू यू लव और हेट स्कूल? बी ऑनेस्ट. आई लव स्कूल. आई जस्ट हेट सम पीपल इन माई स्कूल. Self-obsession isn't bad but over. So yeah, I wanted to reply this from so long कि ये question क्यों नहीं आ रहा. Self-obsession isn't bad but over self-obsession doesn't suits you. So I appreciate your concern, but being self-obsessed is not necessarily a bad thing. Do you think it? I don't think so. And I believe in loving myself and I encourage people around me to do the same. I genuinely appreciate people, I compliment people, and everyone is beautiful on their own way. And my self-love isn't harming any one of you, is it? So why it's a problem to you? Loving ourselves isn't a bad thing, I think. But if it's a problem to you, you should it's high time you should know you are the problem and not the other person. Okay, everyone should love themselves. Yeah, उसमें कोई बुराई नहीं है. You should love yourself. You should appreciate yourself the way you are. पहले मैं नहीं करती थी but अब करती हूँ. So I'm not harming anyone. I think that's all I can reply. And बाकी
I choose not to reply them. So yeah, that's all. Thank you for watching. Also, if you have any more question, you can drop down in the comment section below, and I'll try to make another vlog soon. And that's all. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe if you haven't. So yeah, bye.